Good afternoon, all of you. Nimichand, am I audible? Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Yes, you Good are audible, ma'am. afternoon. Okay. Just 1 second. Very good afternoon, all of you. I'm back again. This is Veena signing in from Hello English. As we have been doing parts of speech classes, I think from last week, it was on Thursday, we had taken up this parts of speech session. And we had also discussed about nouns, if you remember. Today, we are going to talk about pronouns. So what is required? You know that you need to sit with notepads and pen. But one more thing, if you want to join me on the Zoom, you will have to type VEENA1010. I'll just share the link. That is called a pro. That link and just reach and to the people can just take the choice of coming live and speaking to me. Okay. I hope you are able to see my screen, all of you. Very good afternoon, Sheetal and Nemichand, Shivaji, Vidyarani, Sonali, Hardik, Hirom, Jani, and Vista, and everyone out there. Thank you so much for joining. Ojas. Thank you, Pratap Singh Rathore, Shivaji, Tejendra. This is Mahipal, Prasashi Kumar, sorry. Vidya Rani, thank you so much for joining. So, आज हम क्या बात करने वाले? Today we are going to talk about pronouns. Please listen carefully. It's a very important again a topic and a base topic that we are going to talk about. बहुत जरूरी है कि इन base topics को अगर आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो आपको इसके ऊपर लेवल मतलब इससे थोड़ा सा बेहतर और समझने में दिक्कत नहीं आएगी. Construction of sentences will also become easy for all of you. So today we are talking about personal pronouns, subject and object pronouns. अब यहाँ पे क्या है, हम एक सेंटेंस एक वाक्य बनाते हैं. इस वाक्य में जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, पर वो उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, वो किसको रेफर कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट पार्ट पे जाता है. सब्जेक्ट ज्यादातर नाउन्स होते हैं. अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नाउन्स नहीं करके प्रोनाउंस की. So basically, what is a pronoun? What is a subject? What is an object? What is a personal pronoun? How are these object pronouns used? This is all what we are going to learn today. I hope everybody is tied together and well understood how we are going to learn it. I've just shared the pro invite. If anybody is interested, you can come and join me on the Zoom. Now, what is a pronoun basically? A pronoun एक इस तरह का शब्द होता है या कोई form है basically. Pronoun basically that we can use instead of noun or a noun phrase. That's the reason there is a word form written. That means if it is just a word, it can form in the category of a noun. If it is a combination of 2-3 words, basically, तो वो phrase में चला जाता है कि noun का जो phrase होता है ना, उसके लिए भी हम pronoun का इस्तेमाल कर सकते हैं. So basically, हर वो शब्द जो नाउन है उसको हटा के मैं जो प्रोनाउन काम में लेता हूँ, जो वो शब्द काम में लेता हूँ, वो कौन से शब्द हैं अभी हम उसके बारे में बात करेंगे. लेकिन ये जो शब्द हैं ये हमारे प्रोनाउंस बन जाते हैं. अब ये प्रोनाउंस एक शब्द भी हो सकते हैं या फिर जैसे नाउन का फ्रेज होता है 2 या 3 शब्दों के होते हैं, वैसे हमारे पास में प्रोनाउन हमें मतलब इंस्टेड ऑफ नाउन फ्रेज के 3 शब्द ना या 2 शब्द को ना लेके उसके लिeu में हम कोई एक चीज ले लेते हैं जो नाउन प्रोनाउन की जैसे काम करता है. अब यहाँ पे एक एग्जांपल है जो बेसिक प्रोनाउन है हमारा. रिचर्ड इज माय कलीग. Richard is a nice guy. So when we say अब होता क्या है, repetition of the same noun will be monotonous and it will take lot of alphabets to write. So when I say Richard is my colleague, he is a nice guy, then it sounds little different. So because Richard is a boy, I am using in the second line he is a nice guy. So instead of saying Richard is a nice guy, I am saying he is trying to replace Richard, which is a male, which is a boy. अगर मैं यहाँ पे बोलती Veena is my colleague, Veena is a nice girl, then it will be she is. So that वो change आपको gender का ध्यान रखना होगा. Example 2 में देखिए, Jim threw the paper ball. Now noun is not restricted to only the subject. Noun can also become an object. अब यहाँ पे देखो Jim threw the paper ball.
यहाँ पे जिम के अलावा एक और शब्द है बॉल, वो क्या है और वो किसकी बॉल है? कागज की बॉल है. So basically the paper ball and gym, though both are supposed to be noun here. So here gym is supposed to be the subject और डूअर कौन है, कौन कर रहा है, उसका वो कार्य कौन कर रहा है, वो बॉल कर रही है. तो जिम ने क्या करा, वो बॉल को फेंका. So that means वो जो पेपर बॉल थी उसके एक्शन को कंप्लीट किसके किसके एक्शन को उसने कंप्लीट किया? जिम के एक्शन को उसने कंप्लीट किया. सो जिम डिड एन एक्शन, right? Now that object is also a noun. So we can replace the subject, which is a noun. We can replace the object, which is also a noun. And how do we do that? When we are saying gym, we use he. And when we are saying paper ball, we are going to use it because it's a non-living thing. So he did not mean for it to hit the teacher. जिम थ्रू द पेपर बॉल, उसने पेपर बॉल को फेंका. वो ये नहीं चाहता था कि टीचर को लगे, बट उसने वो पेपर बॉल फेंकी. तो पेपर बॉल चूंकि निर्जीव है, समथिंग व्हिच does not what do you say, is able to breathe, I put them in the category of non-living thing. And non-living thing and even the creatures there, we put them in the animals there, we put them in the category of IT, because lot of animals, it's difficult to find out that they have which gender do they belong. So for the safe zone, that is the reason we do it. Otherwise, we can just say them in that section also. अगर हमको जरूरत gets replaced by he and the paper ball by it. He and it both are pronouns. But what is he doing? He is doing the job of a subject and it is doing the job of an object. So what are we doing in this first slide? Understanding that replacing a noun as a subject and replacing a noun which is an object. So both ways we are in a position to replace the nouns. And how do we replace them? By giving them a personal name, by giving them a personal word, which is actually connected to their gender, actually connected to their what they are actually. It's a paper ball, that means it's a non-living thing, so it has to go in the it category. It is Richard who is a boy, so it has to go in the he category. But mind my words there, here he is singular, one. And why do we need to learn this? Because the verb has to collide with this. The verb has to agree with this. That's important for us. Let's go to the next and understand the number of people. What are these personal pronouns doing? जो अभी हमने he की बात करी, यहाँ पे he, ये क्या है? पर्सनल. क्यों? क्योंकि हम रिचर्ड की बात कर रहे हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन की बात हो रही है यहाँ पे. रिचर्ड, पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल. यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल क्या है? अगर मैंने वहां पे लिखा रीना, मीना, शीना एंड वीना वेंट फॉर अ वॉक, ऑल द फोर आर फोर डिफरेंट पीपल. लेकिन अगर उसमें वीना भी थी, मतलब मैं भी हूं, तो मैंने खुद फिर क्या लिखूंगी? वी वेंट फॉर अ वॉक. So instead of writing those four names, I can replace them with a pronoun by saying we. But because I was involved in that, so I'm using we. Otherwise, I would have said they went for a walk. So we are here using the personal pronouns which actually represent their number, singular or plural. एक है या एक से ज्यादा है, वो उनको gender को भी दिखाते हैं, he और she, और person को भी बताते हैं, I और you. So when we are here talking about the person as well, because the personal pronouns surely tells us whether they are talking about for one person, whether they're talking about more persons, whether they are talking about singular, plural, sorry, gender aspect. It's important because that plays the game, because every pronoun is acting as a noun basically. In lieu of noun, it is working. So the verb accordingly has to be placed in the coming sentence there. Only then it is able to complete it. So we find that in personal pronouns, we have got two kinds of personal pronouns. One is the subject and the other is the object. What are these? Subject pronouns take the place of subject. That means जिसके बारे में बात हो रही है वो उसकी जगह ले लेता है.
जिसकी बात हो रही है, आई जैसे हो रही है बात वीना इज स्पीकिंग इंग्लिश, तो वीना को हटा के तुम शी लिख सकते हो, तो ये जो कहलाएगा वो कहलाएगा सब्जेक्ट प्रोनाउन, बिकॉज सब्जेक्ट को हटा के तुमने प्रोनाउन को लगाया। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट फीमेल है, something we have to be careful about. Even to that extent अगर प्लूरल है तो तुम्हें फिर अकॉर्डिंगली लगाना है, उसमें आई वहां पे वी आ जाएगा, क्योंकि अगर खुद को भी उन्होंने इन्वॉल्व कर रखा है, राइट। लेट अस सी, हम आगे बढ़ते हैं। Pronouns that take the place of the subject, doer, the noun doing the action of the sentence are called subject pronouns. अब ये कौन कौन से pronouns है? I है, I love learning English. You are my colleague. शी है, आई, यू, शी, ही, इट, वी, ये सारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस में आते हैं। ऑल आर सब्जेक्ट प्रोनाउंस बिकॉज दे बिकम द सब्जेक्ट एंड देन दे कैरी फॉरवर्ड द सेंटेंस। वो चलाते हैं उन सेंटेंस को, अपने हिसाब से बताते हैं। आई टोल्ड यू टू डू दिस, सो आई एम द वन हु इज गिविंग एन इंस्ट्रक्शन। सो सारा सब कुछ मैं ही तो कह रही हूँ, तो मैं सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है ना, इसलिए वो सब्जेक्ट प्रोनाउंस हो जाता है। You, she is my client. He forgot his password. It was on the table. We have to get back to our work. They work for Wipro. So singular and plural and non-living things. So we have got singular I, we have got singular you, we have got singular she and he. As a plural, don't forget that. Even we comes as a plural and they comes also as a plural. ओके, आइए लेट्स गो टू द नेक्स्ट एंड अंडरस्टैंड। सबसे जरूरी आई थिंक ये जो आप आपके सामने स्लाइड देख रहे हैं पेज 4 पे, इसको कहीं पे लिख लो, कॉपी कर लो, बहुत जरूरी है। पहले तो ये पर्सन समझो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पहला पर्सन वो होता है जिसको जो खुद बात कर रहा होता है, तो मैं खुद को ही सबसे पहले प्रायोरिटी देता हूँ, मैं, आई। और यही एक से ज्यादा होंगे तो फर्स्ट पर्सन क्या हो गए, वी। वैसे ही जब मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू समवन, सो दैट समवन विल बिकम माय सेकंड पर्सन, राइट। सो दैट सेकंड पर्सन वुड बी यू in the singular also, and in the plural also we can use you, because you takes the section of singular and plural both. So accordingly when we put a sentence, we automatically get to understand you or all of you. Third person is the person who is not there, किसी और की कहीं है उसकी बात हो रही है। अब वो सिंगुलर भी, प्लूरल भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। सो व्हाट डू वी डू देयर, वी यूज इंस्टेड ऑफ third person, the noun which is actually is giving us 4 names, I can take there by saying it they. I can say they were going for the party because I am using the third person. वो जा रहे थे पार्टी। अब हम ये भी कह सकते हैं वह जा रही थी, वह जा रहा था। We can also say for non-living things. So the third person will always be he, she, it for one person, singular, and plural will be they. Very important. Please keep these subject pronouns with you. Very important list there. First person is I, singular. Plural is we. Second person is you, and the plural is you or all of you. Third person is he, she, it, and they. Let's understand the objective pronouns. Objective pronouns are used when the person or a thing is an object. As I started off with a sentence and made you understand कि paper ball, तो हमने ऑब्जेक्ट कौन बना, उस नाउन का कार्य किसने किया, एक्शन फॉर्म को कंप्लीट किसने किया, उस ऑब्जेक्ट ने किया। वो ऑब्जेक्ट खुद क्या था, वो भी नाउन था। जैसे आप यहाँ पे देखिए, person or a thing is the object, the receiver of an action, the sentence or a clause. Again, it's not mandatory that it's going to be one single word only. The object could be lengthier words also. मतलब हम किसी चीज को लंबे तरीके से भी तो समझाते हैं ना, जरूरी नहीं कि एक ही शब्द में समझाएं किसी बात को। तो वो एक शब्द भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, वो सेंटेंस भी हो सकता है, वो कोई क्लॉज भी हो सकता है। So as an object pronoun in a word, that stands for a noun, that is the object, a noun that receives the action in the sentence. Now here it says, can they help me? अब अभी हमने पढ़ा दे और मी हमारे लिए, यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउंस में दे हमारा प्लूरल फॉर्म था थर्ड पर्सन के, और यहाँ आए नहीं है, बट यहाँ पे हमारा मी जो ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है हमारे सामने, कैन दे हेल्प मी, दैट्स एन ऑब्जेक्ट। नाउ यू, आई विल वेट फॉर यू, हर, वहां हम ही यूज कर रहे थे,
यहाँ पे हम him यूज करें, so all these are supposed to be the objective pronouns. पर्सनल प्रोनाउन जो सब्जेक्टिव बनते हैं वहां पे ही शी की बात नहीं करते, हर और हिम की बात करते, राइट? आई की बात नहीं करते, मी की बात करते, एज एन ऑब्जेक्ट आई एम सेइंग. सो देम, दे की जगह देम आपने इस्तेमाल किया, आई विल टेक देम, सो देम बिकम्स माय ऑब्जेक्ट. सो आई इज द पर्सनल प्रोनाउन दैट वी हैव and them becomes my object pronoun. So subject pronoun is I and them is my object pronoun. So Nina got a job, she got a job. Here Nina, she is the subject. First wale mein Nina, she are subjects. Hence she is a subject pronoun. When it goes, I gave Nina a job, I gave her a job. So Nina यहाँ पे क्या था? Noun था. तो यहाँ पे जब हमने noun को हटा के her लगाया तो her क्या बन गया? Objective pronoun. So here her is supposed to be, obviously it's a pronoun, but what kind of a pronoun? Objective pronoun. Obviously I is a pronoun which is a personal pronoun. So what place is it taking? Subject, because it is talking about the subject pronoun. At the same time, what are the positions that they take? Of the verb immediately after the verb. Objective pronouns will come, just follow. इधर वर्ब आया और उसका नेक्स्ट वर्ड जो आएगा वो आपका क्या वर्ड आएगा? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का. जैसे कैन यू हेल्प मी प्लीज. अब हेल्प क्या है? आपका वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ लगा? बिल्कुल हेल्प के बाद, मी, बिकॉज दैट एग्जैक्टली द रिसीवर. द एक्शन का रिसीवर कौन होगा? वो प्रोनाउन होगा. So that's the reason that is an object pronoun here. And the positioning. So you have got the subject, you have got the verb, and then you have the object pronoun. That's the way you place. I can hear you. Hear मतलब सुनना. किसको? तुमको. So I become my subject pronoun and you will become here my object pronoun. She likes him. She is supposed to be the subject pronoun and him is supposed to be the object pronoun. पर कौन किसको पसंद करता है? पसंद करना अपने आप में verb है. Like is a verb. Coming to this, we can also use object pronouns after prepositions. Now again, there is another learning happening here, that you can use the objective pronouns just after prepositions. Prepositions are actually connectors. They create relation. So when they create a relation, this is a continuation of happening. So that has to get connected. First part को दूसरे part से connect करना. तो ये जो second part है, ये भी तो कुछ कह रहा है. तो आपका जो पहला part है वो उससे connect कर रहा है उस बात से. इसलिए भी logically समझे बात को, तो वहां पे preposition के साथ में just after preposition again you will get your personal pronouns. But these personal pronouns are supposed to be the object. जैसे जो काम में आ रहा है. She is waiting for me. अब ये कह सकते हैं she is waiting me, नहीं. आप देखोगे साउंड में ही फर्क आ रहा है. मतलब कहीं ना कहीं सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत है. तो she is waiting किसके लिए? मेरे लिए. For लगाना पड़ा वहां पे कनेक्ट करने के लिए. I will buy it क्या? For you. Don't lend it किसको? उसको. To him. Why are you staring at her? So even just after preposition, you are using object pronouns. Let's go to the next. Sheetal, you can't see the slides. Please refresh yourself. Again, this is a very important slide. Please write it somewhere. As I said and explained it to you that there is first, second and third person. First person जब मेरे बारे में बात हो रही है तो I का object जो बन जाता है first person का वो है me. लेकिन यही जब आप उसको सब्जेक्ट की जैसे काम में लेते हो तो I बोलोगे. वैसे ही जब आप उसको प्लूरल की बात करते हो तो आप ऑब्जेक्ट के अंदर अस रखते हो. और यही अगर सब्जेक्ट होता तो उसको क्या लिखते? वी. पर्सन इज ऑलवेज द सेफ लैंडिंग. यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में चलता है. यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में सेम ही लगता है. और थर्ड पर्सन में ही और शी और इट नहीं होगा सब्जेक्ट प्रोनाउन. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या बन जाता है? हिम, हर और इट. दे की जगह क्या हो गया? देम. So important for us to understand. You can't work without it. I am going to keep quiet now. I think you all have to participate. Please come and join. Not saying anything. पहले खत्म होने दो.
keep your things with you. I'll come and discuss this. पर एक बार इसको खत्म होने दो because I want to see. So can I have here Paul to read the sentence for me, please? Paul. थक गए yes, आप ma'am. बात सुनते सुनते? Got tired of my No. voice? No, Yes. no, no. Please come. I am Samantha. Samantha and this is Matt, my husband. We live in New York. Very good. Thank you. तो आपने इंट्रोडक्शन करके क्या बोला? समांथा. और ये मैट है. मैं खुद तो समांथा हूँ और ये मेरे पति हैं मैट. यहाँ एक से दो जने हो गए. तो जब आपने सेकंड पार्ट में इस्तेमाल किया तो आपने सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या बना दिया? वी. वी लिव इन न्यूयॉर्क. चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए. काम. Yes, I forgot to appreciate Pratap, Lovepreet, Ishan, Vidyarani, Rachit, and Shrishti. Please try this out. Remind me to call my aunt. So remind me to call my aunt. I ने लिखा है me क्योंकि आपने यहाँ पे me का इस्तेमाल किया है. Remind me, which is supposed to be the subject working there. किसको remind करना है? मेरी aunt को. यहाँ पे object pronoun क्या हो गया? My. Remind me to call my aunt. Please come forward. Yes, Manjot Singh. Thank you and good afternoon. और बहुत सारे जनों ने कहा था. Okay, Shrishti. No, सारे जनों ने कहा था. Remind me to call my aunt. Good afternoon. A lot of people said I'm sorry, but I was very seriously discussing the topic and I would have got distracted, so I could not give you the good afternoon message there. Pratap is there with me. Pratap, could you please read the sentence here? Yes, ma'am. I bought this pen last week and now it does not work. ये पिछले हफ्ता मैंने पेन खरीदा था, ये काम नहीं कर रहा है. तो सब्जेक्ट जो था वो ऑब्जेक्ट कौन से वर्ड में शो कर रहा है? सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है? It. सब्जेक्ट प्रोनाउन. Subject. This pen. सब्जेक्ट. हाँ. और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या हो गया? इट. है ना? नाउ इट डजंट वर्क. तो ऑब्जेक्ट का जो रेफर कर रहा है वो है इट. चलिए. I is supposed to be the subject talking about pen and then we are referring to the object it. Let's try next. Nemichan, are you there with Yes, me? ma'am. Get ready, I'll call you. Yes, ma'am. Read. He and I needed some rest. Very good. He and I needed some rest. Uttara, Shrishti, Nemichan, Rajkumari and Pratap and Paul have given us the right answer. He and me, him and I, him and me, and then he and I. So you seriously can see the differences between कहाँ मुझे he के साथ में क्या me जाएगा, him के साथ में क्या I जाएगा. ये आपको चेक करना जरूरी है कि क्या ये सही मायने में प्रोनाउंस एक साथ कोलाइड कर रहे हैं कि नहीं. Let's go to the next. Okay. I think we have got Gunjan Saini with us. Gunjan? Yes, ma'am. Can you just read this sentence for me, please? Where are the reports? Thought gave them to you. Absolutely. तो यहाँ जो then शब्द है वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? Gunjan? Yes, ma'am. किसके लिए, किस शब्द के लिए then इस्तेमाल हुआ यहाँ पे? यहाँ कह रहे हैं कि तुमने कहा, तुम पूछ रही हो कि रिपोर्ट्स कहाँ पर है, क्योंकि मुझे याद है मैंने तुमको ही दिए थे. तो तुमको क्या दिया था मैंने? Reports. तो रिपोर्ट्स के लिए ही then शब्द इस्तेमाल में है. So as an object we are using here them, as a subject we are using here I. चलिए आइए नेक्स्ट पे आ जाइए. प्रताप प्लीज कम.
Yes, ma'am. I don't know why I invite the Thompsons. They had parties. Hate. I don't know why I Hate, invited Thompsons. They hate parties. मुझे खुद को समझ में hate नहीं आ रहा. party. जो Thompsons basically plural है, तो second part of the section में हमने subject जो है वो they कर दिया, which are because it Okay. was the plural section there. Thank you so much. आ जाइए नेमी चंद. Okay, ma'am. Hello, boys and girls. Could all of you listen to me for a minute? इसको देखो ना थोड़ा फ्लो में और एक पूरा एक्शन के साथ बोल के दिखाओ ना. पंक्चुएशन भी Okay, देखो, ma'am. सब देखो. हाँ. Hello, boys and girls. Could all of you listen to me for a minute? Hello, boys and girls. Could you all listen to me for a minute? Very good there, Nemi Chan. Come, Paul. Let's start there. Ajay, Paul. Um, where would you like me to place the dinner napkin? Dinner napkin. Very good. Sold. I put them over there. Should I put them? तो यहाँ पे them किसके लिए ले रहे हैं, Paul? समझ में आ रहा है किसकी बात कर रहे हैं? Actually, ma'am, ये dinner napkin. Absolutely. Napkins की ही बात कर रहे हैं कि डिनर के जो napkins नहीं लगाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते एक napkin देता है ना, उसकी बात कर रहे हैं. तो तुम मुझे बता दो इसको कहाँ पे रखना है. मुझे ऐसा लगता है वहां रख सकता हूँ मैं इनको. थैंक यू सो मच. आ जाइए गुंजन. Get ready. Yes, ma'am. The teacher scolded him and me. Scolded him and me. Okay. Him and me. Yes, I नहीं लगा के, है ना, I नहीं लगा के मैंने उससे me लगाया, और him चूंकि वो वहां मौजूद नहीं है तो थर्ड पर्सन पे आ गया, क्योंकि कहीं और हुई है ये चीज. शायद इजी है, कोई मुश्किल तो नहीं आ रही. इजी. Mark, Lisa and I went to the park. Mark, Lisa and I went to the park. Gunjan, read this again. Yes, ma'am. The money will be divided between you and I. Absolutely. You and I. The money will be divided between तुम्हारे और मेरे बीच में ये पैसे आपस में divide होंगे. So you and I. Madam, Rahul, you and I, no, you and me. हाँ, सॉरी, मैं ठीक ही कर रही थी राहुल बोल के. थैंक यू सो मच बीच में बताने के लिए. पुराने वाले पे ही मेरा ध्यान था. अब मैं इस वाले को बोल रही थी और नेक्स्ट स्लाइड पे You हम and me. Yes, हाँ, yes. इस पे यू एंड मी है. ठीक है ना. हमने 17th वाला मार्क, लीजा एंड आई वेंट टू द पार्क, उनको कनेक्ट कर रही हूँ. ये दो जो थे वो थर्ड पर्सन, और ये मैं अपनी बात कर रही हूँ. और फिर इस सेक्शन में मैं देखती हूँ कि मनी का जो डिवीजन होना है वो तुम्हारे और मेरे बीच में होना है. तो मैंने वहां पे आई को नहीं लिखा. क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट वहां पे मनी था. अब इसको मुझे ऑब्जेक्ट लिखना है, खुद को एज एन ऑब्जेक्ट लिखना है, तो फिर मैं वहां पे मी का इस्तेमाल करूँ. नाउ आई होप आई एम राइट. Paul, Rahul, Rajkumari, Neemichan, Khan and Janu have given us the right answer. आइए नेक्स्ट पे चलते हैं. When not sure whether to use the subject pronoun or the object. अब ये safe landing समझते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं. सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात कर रही हूँ, रिप्लेस कर रही हूँ, उसके में प्रोनाउन को लगाने का या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में लगाने का. सेंटेंस को हम उल्टा घुमा सकते हैं. The best student in the class is, जो भी नाम. Now try turning it around now. He is the best student in the class. तो आपको अगर कभी नहीं समझ आए कि सब्जेक्ट किसको बनाना है, अच्छा किसको ऑब्जेक्ट प्लेस करना है, तो सेंटेंस को आप घुमा दीजिए. ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास. ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास. आपका क्या मिला? आपको जवाब मिला है. सो द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास इज so and so name. That's the way we are going to place it. Now, hence the correct sentence would be the best student in the class is he. So when we are actually we are confused, we can also twist the sentence and make it accordingly.
क्योंकि एक्टिव पैसिव अभी अभी मैं आप कंफ्यूज कर दूंगी, इसलिए छोड़ देती हूँ अभी इस बात को। Rajkumari, Pratap, Shrishti, Uttara, Gunjan, and Khan have given us the right answer. Our boss had dinner with my friend and me. My, me. क्योंकि आर मतलब हम दोनों का, तो फ्रेंड कौन सा, मेरा, मतलब कॉमन है, वो फ्रेंड का भी बॉस है मेरा भी बॉस, तो आर बॉस दोनों का, मेरा दोस्त एंड मी। आइए नेक्स्ट ट्राई करें। Yes, can I have here Gunjan reading the sentence for me, please? Gunjan, Yes, ma'am. please read it. The problematic Employees, employees are they नहीं तो हम they. हाँ, नहीं तो होता क्या, दे आर द प्रॉब्लमैटिक एम्प्लॉइज, हम ऐसे भी लिख सकते थे। अब इसका कान मरोड़ के उल्टा कर दिया, द प्रॉब्लमैटिक एम्प्लॉइज आर दे, उसी को उल्टा कर दिया। अगर आपको नहीं समझ आए तो इसको आप ऐसे भी कर सकते, कोई सेंटेंस में कोई गलती नहीं आएगी। बस हाँ, हम लोग को आदत नहीं है ऐसे सेंटेंस बनाने की, तो खुद पे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, बाकी अदरवाइज इट्स एब्सोल्युटली राइट। यस प्रताप, आप आएंगे प्लीज आगे। Yes, ma'am. हाँ, May I please speak to Ginny? Yes, this is she. yes, this is she. तो she यहाँ पे कौन है? Subject. Subject pronoun है। नहीं तो यहाँ पे she कौन है? जब आप सेंटेंस पूरा देखोगे क्या नाम आ रहा है वहाँ? Yes, ma'am. बताएं। एक मिनट, जिन्नी। एब्सोल्युटली। तो मैं किससे बात कर सकती हूँ? जिन्नी से। तो आप कहते हो हाँ ये शी, इससे बात कर देना, ये लो ये रही। So may I is a request sentence there, and then the other person is giving him the answer by saying yes, this is she. Instead of saying she is this one, yes, this is she, ऐसे भी बोल सकते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट भी बना सकते हैं, घुमा सकते हैं उसको आप सेंटेंस में। बट वो क्या है, अगेन प्रोनाउंसिएशन और स्पीकिंग में हमने सीखा नहीं, तो थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आ जाती है। The person who performed the best class was she. She was the best person to perform. ऐसे सेंटेंस था ही, अब उसको हमने घुमा दिया तो क्या आ गया? The person who performed the best was she. That means जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। प्रोनाउंस में इतना सा शिफ्ट हुआ और कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। So we have Rajkumari, Pratap, Tasneem, Gunjan, Janu, and Jyoti. So can I have Gunjan here, please, for reading this sentence? Yes, ma'am. पढ़ो। Samantha helped Tina and me finish the project. वेरी गुड। अब इसको अगर मैं आई का इस्तेमाल करूं तो सेंटेंस को कैसे घुमाओगे, ट्राई करोगे? आप में से कोई भी बोलो, चारों में से एनीबडी हु इज विथ मी ऑन द प्रो, एनीबडी कैन स्पीक और एनीबडी कैन पुट इट ऑन द चैट आल्सो। हां, Samantha helped I and Tina finish the project. Samantha helped I and Tina, no, wrong. To finish the project होता है, preposition लगाना पड़ता है। मैं बोलूंगी, गलत हो ट्राई करो। हाँ, I and Tina, Samantha helped finish the project. बहुत सब सही था, बस एक इतना सा गलती थी। I and Tina helped Samantha to finish the project. Yes. सिंपल था वो, बस ये तो ठीक है, आपने मी आंसर है, यहाँ सब ठीक है। बट मैं इसको बात, अब अल्टीमेटली पॉइंट जो था ना, जो कहना चाहते वो एज इट इज वैसा का वैसे ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ।
but you can do this shifting part. तो अब ऑर्डर क्या है प्रोनाउन का, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइंस है, मैं थोड़ी देर रख रही हूँ सामने, इसको कॉपी कर लीजिए, बेहतर होगा कि इंग्लिश के अंदर इफ व्हेन वी ट्राई एंड मेक सेंटेंसेस, आई, वी, you, he, she, they are used in the same sentence, then the order of their usage, you followed by he, she, they followed by I and we. That means then जब हमारा ऑर्डर होगा ना यूसेज का, उसको फॉलो करने के लिए यू के साथ फॉलो करेगा ही, यू के साथ फॉलो करेगा शी, यू के साथ फॉलो करेगा दे, यू दे फॉलोड, और इसको कौन फॉलो करता है, आई एंड वी, आई, यू एंड ही विल गो टू लंदन टुमारो। ये गलत हो गया, सही क्या होगा, यू, ही एंड आई विल गो टू लंदन टुमारो। That means if I am using you, it has to be followed by he, she, they, और इनको कौन फॉलो करेगा, I और we। बस ये इतनी सी छोटी सी चीजें जिसको आपको याद रखना पड़ेगा कि अंग्रेजी दे इस्तेमाल होते हैं, और इनमें से जो यू है सेकंड पर्सन है, उसके साथ में थर्ड पर्सन लगाए जाते हैं, मतलब वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इसी के आगे चलते हैं, और फिर ये जो थर्ड पर्सन है उनको फॉलो करता है आई एंड वी। आइए, अब आई एंड ही होगा या ही एंड आई होगा, यही अभी अभी हमने समझा। यस प्रताप, which one should I take? Yes, ma'am. He and I are twins. That's why we look so similar. So similar. So similar. हाँ, that's why we look so similar. Shrishti, Pratap, Kamal, Komal, Gunjan, Mahipal and Rahul have given us the right answer. So दिया, उसका कारण क्या है कि जब भी हम रेफर करते हैं किसी दूसरे को अपने आप के साथ में, मतलब हम भी उसके साथ में आते हैं, तो हम उसका जो नाम है उसको वी ट्राई एंड पुट देम, वी ट्राई एंड रेफर देम, या तो उसके नाम को रेफर करेंगे या फिर उसकी जगह हम प्रोनाउन को रेफर करते हैं। जैसे हम पहले कहेंगे राम एंड आई आर गोइंग आउट, फर्स्ट राम एंड आई आर गोइंग आउट, he and I are going out, that's the right way to say it, I and he नहीं। चलिए, I just refreshed myself, just a second, I want to drink water, I forgot my glass। Rajkumari, Shrishti, Seema, Komal, Nemichand and Mahipal have given us the right answer. Pick the correct option. There is a secret between you and me. This is a secret, sorry, this is you and me। अब यहाँ पे सेंटेंस सेकंड वाला इनकरेक्ट, फर्स्ट वाला करेक्ट है। This is a secret between you and me। Now, why have we taken the first one as correct? Because whenever जब भी हम दो जनों को रेफर करते हैं ना, one of which is the speaker, उसमें से जो बोलता है, मतलब मैं ही तो, अगर दो जने बोल रही हैं, रेफर कर रही हैं, तो कोई ना कोई तो बोल रहा होगा, तो वो himself or herself, the speaker should put the pronoun that refers to himself or herself after the pronoun that is used to refer the other person। That means if I have to say this is a secret between you and me, तो खुद को आप बाद में ही बात करते हैं, पहले नहीं बात करते। Any questions anyone has till this place, please ask me from chat or from हेलो मैम। हाँ बोलो। मैं बोल रही हूँ मैम, हिम कहाँ बैठता है, हिम? एक मिनट, आपको हम स्लाइड दिखा देते हैं, थोड़ा आइडिया लगेगा, है ना। एक मिनट, आई टेक यू बैक टू दैट स्लाइड। मैं रिफ्रेश कर रही हूँ एक्चुअली, तो अभी स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा।
Paul has requested, and Paul, can you see my screen, page 7? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखिए यहाँ पे, आप जब भी हिम की बात करते हैं ना, हिम की, हर की, इट की, इसका मतलब कि इन्होंने सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनाए, ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट जो होता है वो ही और शी होता है, और हिम जो है वो थर्ड पर्सन के लिए काम में आता है, मेल के लिए काम में आता है, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बनता है। मतलब हम जो भी कार्य सब्जेक्ट कर रहा है उसको कंप्लीट करने का काम जो है ये हिम और हर कर रहे हैं। आई आस्क्ड हिम टू कम। आई कौन है? मैंने कहा। तो कौन है डूअर? कौन है करने वाला? मैं हूँ। सब्जेक्ट कौन है? मैं हूँ। और मैं क्या कह रही हूँ कि मैंने उसको बोला। सो आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम टू कम। तो जब सब्जेक्ट है उसने एक एक्शन कहा, उसने कहा, मैंने उसको कहा। किसको कहा? उसको कहा। तो डूअर कौन हो गया? हिम हो गया। तो जो डूअर है वो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, और वर्ब के जस्ट बाद प्लेस हो जाएगा, या फिर प्रपोजिशन के बाद प्लेस होता है। तो जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, ज्यादातर की बात है, मैक्सिमम ऐसा ही होता है, बट प्रपोजिशंस रेगुलर में भी काम आते हैं। तो रिलेशन बनाने के लिए जो प्रपोजिशंस आप काम में ले रहे होंगे, वहां पे उसके जस्ट बाद में भी आप प्रोनाउन को लगा सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। डिड आई क्लियर यू? Okay, okay, ma'am. Okay, anyone else has anything to say, please tell me. Come up and ask. और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ये, इनके बेसिक्स अगर नहीं समझेंगे तो आपको बाद में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। सूरज कूल, कहिए कैसे हेल्प करूं मैं आपकी? सूरज बताएं। सूरज, यू आर आस्किंग समथिंग दैट मैम प्लीज हेल्प, टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू? You will have to tell me how will I help you. I'll just go to the what we say, this leaderboard, so that you are able to at least talk about something, and then तब तक आप टाइप कर लीजिए, मैं आपका क्वेश्चन ले लूँ। ओके, hello Tejinder Kaul. So we have Rajkumari with 145 points. Very good, Rajkumari. Srinivas with 132 points. Manipal with 131. Shrishti with 129. Sheetal with 108. We have Pratap with 103. Very good, Pratap. Lovepreet with 80 coins. Nemichand with 69 coins. Okay, Vidya Rani is with 62, Tejinder with 61. And Tejinder, you are saying that this is your first class, but I can see you scored so well. Tejinder Kaur. So it's quite well. You have got 61 coins. You can really do good. Ishan with 58 coins and Komal with 54. Rahul with 51. Thank you, Maipal Singh. Rahul with 51. Janu with 47. Even Vandana is with 47. Pandit is with 45. And Inder is with 38. Gunjan is with 33. Surat is with 27. Thank you so much, everyone. Suraj, you want to speak in English, but you have to basic understanding को clear कर लो, उसके बाद अंग्रेजी बोलना भी सीख जाओगे. That's all what we had today. I'm so sorry, Saurabh, you have joined so late. This is the time for the class to get over, और आप अब join करें बेटा. I'm so sorry, but it was very important session. आपके और कोई भी टीचर जो हेलो इंग्लिश में ज्वाइन करे ना, अगर वहाँ ये सेशन हो रहा हो तो एक बार ये थर्ड टाइम भी ज्वाइन करिए, so that you are able to clearly understand it. That's just my suggestion to all of you. Okay, nobody has any questions, so I would like to sign off. Anyone? Thank you, Mahipal, for coming and saying that. Thank you, Tejinder, for joining. Looking forward, Sheetal, that you will join me tomorrow same time. I am available Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday at 12 o'clock. I come every few days. In this month I am on leave because of some personal reasons. I'm going to miss you people, and you're going to miss me too. Bye bye and take care of it. अपना Thank ख्याल you, ma'am. रखिए.